So, hello everyone, and welcome back again to UEC News. When we go in college, we are often confused about the right way to ace the good package. So, today we will help you out with this. So today we have very special guest with us, Mr. Aditya Bhandari, sir. They get placed at TCS Digital with the package of 7 LPA. First of all, congratulations, sir, and welcome to UEC Journalism Society. Thank you. I'm glad to be here. So, let me first introduce Aditya sir. He is from batch 2019 to 2023, and he's from Electronics and Communication branch. So, without wasting time, let's begin our interview. So my first question is like there is a lot of ambiguity regarding the whole recruitment process. So could you please elaborate on the process right from the registering to the final interview round? So the process of TCS, at the particular TCS, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I will take you from my point of view, like how I proceeded with the complete interview process. So first of all, we had the pre-placement talk. Usually it was on-campus placement by TCS. So we were informed about the all the tests and all everything when all this is going to happen. So initially, we also did not have much like fixed dates as to when the test is going to be. So we got the mails and all. The complete communication is off campus only. Or it is only like we can say it is not on campus. I don't know because पूरा communication जो होता है वो mails के through होता है. So we got mails regarding our exams and all. So they had uh, during our time we had online exams. तो 10 slots थे, 10 दिन के slots थे, उसमें भी daily दो exams होते थे. So we got these slots, and after the exams, I think around after 20 or 25 days, we got interview calls. So some students even got after 1.5 months. So like there isn't a fixed time after exam, like when you will get result and when you will get interview calls. So yes, we got interview calls, and I got digital interview call. Like I was shortlisted for the digital in the NQT test. The interview, and then we had the interview. After interview, around I think 1 month later, we got our offer letters. So initially, I did not get the digital offer letter. I was given the Ninja offer letter, but then later, around in March or April, I think, we again got the chance to upgrade our offer to digital, and that time also we had an exam. And after clearing that exam, we again had an interview, and after clearing the interview, we were upgraded to a digital offer. Okay, sir. सर एक कंफ्यूजन रहता है रिगार्डिंग रिज्यूमे कैसे बनाना है और क्या चीज़ें सर इंक्लूड करनी चाहिए रिज्यूमे में. So first of all, the resume should be single page resume. You should not make it more than a single page, and it should have your basic contact, the contact number, email ID. You can even include GitHub links or LinkedIn link, LinkedIn profile link in your resume. Uh, Below that, you will have to add college and school. You can avoid 10th class because it is not much relevant. If you want, you can add, but I will say just skip it because you have to manage it all in a single page. And if you have less content on your resume, then you can include it. So after education, you can include your experience, past experience. If you have done some internships and all, it is better to include them. Include the bullet points, the things that you did in internship, the things that you learned from them. So you can include that. After that, you can include your projects. You can include 3 projects max. Don't include more than 3 projects because everything that the interviewer is going to ask will be related to the projects. And you should also keep in mind that the projects you are including in the resume should be done by you. Like you should have a good knowledge of your projects because usually the questions that are asked will be from the projects, and if you can't answer them, it will make a very negative impact on to the interviewer. So you can include your projects. After projects, you can include skills. The skills should not be like too many because you cannot learn every kind of skill in these 4 years. So you should include limited amount of skills. And also keep in mind whichever company you're applying for. Uh,
this is not for a service-based company, but if you're applying for some internships or some product-based companies, keep a look on the job description, and whatever the skills they are looking for, try to include those skills in your resume. After skills, you can also add some achievements or extraordinary skills that you have unrelated to the technological domain. So yes, this should all be in your resume. So what about the like the format of the resume, क्योंकि आजकल काफी जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं उसमें जो रहता है वो टू पार्ट में आता है, एक तरफ आपकी स्किल्स वगैरह और एक तरफ आपकी जो भी क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो लाइक वो करेक्ट फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट का क्या रोल होता है, लाइक वो कुछ इंपॉर्टेंस रखता है अपने एंटायर हायरिंग प्रोसेस में? या मतलब फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. यू शुड हैव ए लाइक क्लीन फॉर्मेट. मतलब वो दो कॉलम वाला भी मेरे हिसाब से ठीक है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, बट आई प्रेफर सिंगल कॉलम विच शुड बी नीट एंड क्लीन. लाइक मैंने ओवरलीफ एक वेबसाइट है उधर से रेज्यूमे बनाया था, तो you can take a look there. Like it should be neat and clean. You should include the only the available like fonts which are used mostly, like Arial or uh, Times New Roman, something like that. So it looks good and all. You should also include links to your projects, to your certificates if there is any in the resume, because normally nowadays resume will be the soft copy only. So the employer should be able to click on those links and see where it takes you. Sir, how many coding languages should we learn and which coding language is generally preferred by companies? Uh, the I think for DSA, for data structure algorithm, or for the logical part of coding, you should do only one language, whatever you are comfortable in, be it C++ or Java. I would prefer not to use Python, because what happens is sometimes most of the companies sometimes not allow Python. So I would say you stick with Java and C++ to be on the safer side. And yes, and apart from the DSA, you should learn the HTML, CSS, JavaScript along with React, Angular if you have enough time. Okay, sir. Sir, are there any additional certification courses you would recommend to enhance our profile and resume? Yeah, like I don't know, you don't have to do other certifications. Company doesn't look for those certificates. Let me tell you, like a lot of people think that if we have a lot of certificates, we will like it will be a positive impact. But I don't believe it matters a lot, because what interviewers looks for is skills. Like I haven't included any kind of certifications in my resume. I only had the projects and the internship certificate that I did, and I don't think we need a lot of certifications. Sir, and like the importance of communication in our interview and how it would be improve it, मतलब कैसे improve करे उसे, और like जैसे कई कई सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम पे होते हैं, तो ऑलरेडी नॉलेज होता है, स्किल्स होती है, कोडिंग लैंग्वेजेस में भी मास्टर होते हैं, बट वो इन द एट द एंड जब इंटरव्यू राउंड आता है तो दे फेल देयर समटाइम्स. So this is a very valid point, very nice question raised by you. So I believe the communication is very important to crack any interview. Like I think it is even more valued than a coding skills you have, because normally what happens is no, a lot of candidates have really good coding skills, they have really good knowledge about the domain, but they are unable to communicate to the interviewer. So that poses a very big problem. So I would suggest for Hindi medium students to start talking and with their friends. You don't have to be grammatically correct all the time, but just you should gain the confidence by talking with each other. You should start reading some books or even newspapers. So it will give you confidence. Like so, that is what you need. Okay, sir. Sir, there is a lot of confusion regarding aptitude. Sir, how can we improve it and what is the importance of aptitude? See, in service-based company, if you want to crack a service-based company, aptitude is must. So, along with coding, you should start doing aptitude prior to like. I would suggest you should start doing aptitude prior to like 1 month or 2 months prior to the examination. So, we can learn aptitude by solving previous year questions. What I did was there is this. Website. I don't remember right now, but from there I have practiced the aptitude questions and all the previous year TCS questions. So normally what happens is the questions does not repeat, but you get the idea of what kind of topics they ask, how to solve a particular type of question, and it helps. Eventually, same concept is used mostly by TCS. So these kind of questions repeat, and you can easily solve them if they come in exam.
सर एंड मतलब आपने जब जो कोडिंग की थी उसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज किए थे? मैंने स्टार्ट किया था Geeks for Geeks पे. Like I have sold around like when I started I sold around 50 to 80 questions on Geeks for Geeks. Then I started with lead code. क्योंकि लीड कोड पे क्या है ना, इजी लेवल के क्वेश्चंस भी थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं. लाइक यू हैव टू यूज योर लॉजिकल एबिलिटीज इन दैट. So I would suggest students to start with Geeks for Geeks, solve maybe 50 or 80 questions, keep them easy, and then shift towards lead code, because lead code has a very good support base. The comments and the solutions, they are very good. So yes. सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग उन बच्चों के लिए जिनकी आईटी या फिर सीएस से बिलोंग नहीं करते हैं, तो लाइक हाउ मेनी इंटर्नशिप शुड वी डू एंड इन विच सेक्टर, इन आईटी और एल्स इन लाइक इन कोर? जैसे आपका ईसी था तो फिर आपने अपने पास एक कंफ्यूजन रहता है कि या तो सीएस में करे या फिर ईसी में करूँ, मैं क्या करूँ, लाइक इट्स लाइक दैट. तो उसका क्या सोल्यूशन है, या फिर दोनों में हाँ, करना चाहिए? देखो, अगर आपको प्लेसमेंट आईटी में चाहिए तो मतलब यू यू हैव टू प्रेफर इंटर्नशिप इन द आईटी डोमेन. क्योंकि अगर आपको इंटर्नशिप आईटी में चाहिए तो बेनिफिशियल रहेगा अगर आपने इंटर्नशिप भी आईटी से किया है तो. बट इट इज़ नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम इफ यू हैव इवन डन इंटर्नशिप इन कोर. मैनी कंपनीज अंडरस्टैंड, क्योंकि वो समझते हैं कि स्टूडेंट ईसी बैकग्राउंड से है या और कोई बैकग्राउंड से है, उन्होंने कोर की स्टडी की है, तो दे डोंट माइंड अबाउट इट. बट व्हाट मैटर्स इज you should you should have done some internships and you should have the knowledge about it whatever questions, because mostly what happens is कि अदर जो ब्रांचेस के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो उन्हें दूसरी ब्रांचेस का भी नॉलेज होता है, तो कई बार कोर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इवन तो द कंपनी इज आईटी कंपनी. तो उस टाइम पे अगर आप अच्छे से आंसर्स दे देते हो तो इट क्रिएट्स ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू. How did you prepare for TCS recruitment process and what resources did you prefer? Okay, so I've told, I have solved previous year TCS questions. Apart from that, there are various YouTube playlists that you can follow. Even they have like aptitude playlist, they have coding playlist, previous year TCS questions. You can follow all of them to get a good grip of the for the examination. And for interview part, they are mostly like the basic questions, basic web development questions, or if you have done some React or Angular framework, then there are basic questions from there. There will be the project level questions. So all these things are available easily on the internet. You can go on YouTube. You can easily look for these materials. So it won't be much of a problem. So, sir, like the next question is, can you give your experience during your TCS interview round? And जो टेक्निकल और जो एचआर इंटरव्यू हुए थे वो साथ साथ हुए थे या फिर अलग अलग डेज पे हुए थे? एंड मतलब उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे थे और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था? Okay. So मेरे पास दो इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस है. The first was when I got digital interview and was rejected in it, and then the second interview where I cleared the interview. तो पहला इंटरव्यू जो था वो ऑलमोस्ट मेरा 45 मिनट्स तक चला था. उसमें we usually have three interviews: the technical interview, managerial interview, and HR interview. तो टेक्निकल इंटरव्यू जो था वो काफ़ी डिटेल में उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे. सो लाइक दे वेंट वेरी डीप, काफ़ी ज़्यादा पूछने लगे थे. तो आई गॉट नर्वस एंड आई वाज अनएबल टू आंसर सम क्वेश्चंस, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग. So in the second interview, the questions were comparatively easier, and also I overcame my nervousness at that time, so maybe that was a plus point. So overall, the interview is not very tough. It is if you have done even a little bit development, if you have developed some websites and you have idea about your projects and the basic questions that are asked in the interview, so you can easily crack it. So these are the things. The questions asked were mostly basic, like uh, they even asked like how do you make a list in HTML, how what are routers. These are the basic questions that they asked. So like overall conceptual clarity होनी जरूरी है. Yeah, true. The conceptual clarity is must.
सर लाइक जैसा आपने मेंशन किया था कि टीसीएस दो चांसेस देती है अगर आपका निंजा में हो जाता है और फिर आप डिजिटल में अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो एक या दो चांसेस देती है। तो सर बच्चों का काफी कंफ्यूजन था उस रिगार्ड में जब लाइक प्री प्लेसमेंट टॉक हुई थी उस टाइम पे भी, बट बच्चे फिर भी कंफ्यूज थे, तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा इंसाइट्स दे दीजिए। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों का हुआ था एनक्यूटी। एनक्यूटी है जब हम लोगों ने क्लियर किया तो कुछ कैंडिडेट्स को डिजिटल इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, कुछ को निंजा के लिए कॉल आया था। एंड इफ डिजिटल कैंडिडेट डिड नॉट परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं किया था तो काफ़ी अच्छा भी नहीं किया था, तो उन लोगों को निंजा ऑफर दे दिए गए थे। और और जिन्होंने अच्छा किया था उनको डिजिटल मिल गए थे। दिस वाज द एंड ऑफ द इनिशियल ऑफर। और उसके बाद टीसीएस हैज़ दिस आईपीए एग्ज़ाम। वो इंसेंटिव के लिए एग्ज़ाम होती है, 60,000 इंसेंटिव रहता है उसमें। उस एग्ज़ाम में आपको 80 प्लस स्कोर अगर आप करते हो तो इंसेंटिव मिलता है। And what they did was after IPA, I think after 5 or 6 IPA, मतलब ये हर मंथ 2 बार एग्जाम होती है स्टार्टिंग फ्रॉम February। तो उसके बाद लगभग 5 या 6 एग्जाम के बाद हम लोगों ने एक मेल आया था कि जिन लोगों के भी 80 अबाव है उन लोगों को डिजिटल एग्जाम वापस देने का चांस मिल रहा था। तो नहीं, I missed one thing. They give chance to everyone to upgrade in digital. Like they had a DCA, digital upgrade exam, something like that. So they gave everyone chance to give the exam, and if the student cleared the exam, then they got the call to get upgraded to digital. सो ये हो गया एक अपडेट का प्रोसेस। उसके बाद इन लोगों ने एक बार और चांस दिया था जिन भी स्टूडेंट्स के 80 प्लस थे आईपी एग्जाम में, उन लोगों को डायरेक्ट उन लोगों को एग्जाम के लिए वापस से इन लोगों ने इनवाइट किया था। और अगर एग्जाम क्लियर हुई तो फिर से इंटरव्यू लेके इन लोगों को भी अपग्रेड का ऑफर दिया था। ओके सर। सर हमने इंस्टाग्राम पे एक पोल रखा था सर, उसमें कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन आए थे कि सर से ये पूछना है या फिर उनसे ये पूछ लेना, हमको ये कंफ्यूजन है। तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उससे रिलेटेड। सर हर्ष पटेल का क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन। या अच्छा सा रेज्यूमे बना लो, अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, एंड देन जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग टू लिंक्डइन। You will have to apply to almost 20 companies a day because most of these companies will not revert back to you. So it is important not to get demotivated कि यार उधर से तो कुछ रिप्लाई आ ही नहीं रहे, कंपनी से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहे। तो don't get demotivated, just keep on applying। LinkedIn पे अप्लाई करो, इवन यू कैन अप्लाई इन इंटर्नशाला पे भी फुल टाइम ऑफर्स के लिए रहता है। And still you can do internship in your free time because mostly now college fourth year में इतना ज़्यादा पढ़ाई के लिए कुछ रहता नहीं है, कॉलेज क्लासेस रहती नहीं है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल। सर नुजहत और अविनाश ने पूछा है कि व्हेन यू शुड स्टार्ट टू प्रिपेयर एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। तो लाइक आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी है, बट एक लाइक 3 या 4 लाइंस में उसको लाइक फर्स्ट आप कोडिंग करो, फिर एप्टीट्यूड 3-4 लाइंस में आप उसको थोड़ा सा समराइज कर दीजिए। एंड लाइक अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हेन you should start to prepare. See, I would suggest you to start with coding as soon as possible। मतलब लोगों को लगता है कि अब टाइम नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम आज ही स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट एग्जाम तक तुम लोगों को काफ़ी कुछ कर लोगे। यू शुड स्टार्ट विद कोडिंग द नेक्स्ट मोमेंट यू गेट। मतलब जब भी आप सोच रहे हो ना कि स्टार्ट करना है तो कोडिंग स्टार्ट कर दो, ईजी क्वेश्चंस करो, जस्ट बिल्ड योर लॉजिकल एबिलिटीज़। उसको लॉजिकल एबिलिटी को कैसे कोड करना है बस वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो बस इतना करने से यू विल क्रैक मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनीज। और उसके बाद तुम्हें एडवांस पे जाना है तो स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स स्टार्ट कर दो, ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, देन देयर इज लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज। इन लोगों को इन टॉपिक्स को क्लियर करने लग जाओ तो यू विल बी easily like able to crack even the second TCS NQT question। Because what happens is first question is logical ability and the second question is more towards data structure। you will have to use some kind of data structure in the second question। तो वो कोडिंग स्टार्ट कर दो। एप्टीट्यूड के लिए मतलब एग्ज़ाम
अगर आपकी नेक्स्ट मंथ है, आई वुड सजेस्ट कि 1 महीने पहले स्टार्ट कर दो एप्टीट्यूड। उसके साथ साथ इंग्लिश को भी पूरा अवॉइड मत करना। इफ़ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामेटिकल एंड एवरीथिंग, देन इट इज़ ओके, यू कैन maybe give 1 or 2 weeks is enough for English. बाकी उसके अलावा रीजनिंग एंड मैथमेटिकल पार्ट इज इम्पोर्टेंट, सो यस। One more student asked, that is Praval Sharma. He asked that is DSA required for service-based companies? Like how important it is? No, like for most of the companies, you can see data structures includes these tough topics such as graphs as well. But you don't have to go so much deeper in them to crack service-based companies. But mostly क्या होता है ना कि if you have enough, like you can code anything without using data structures. तो अगर तुम उतना कर लेते हो तो इजीली तुम कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक कर सकते हो। मतलब आई वुड से इफ यू कैन इजीली कोड ए लीड कोड इजी लेवल क्वेश्चन, तो मतलब यू कैन इजीली क्रैक एनी सर्विस बेस्ड कंपनी। बट अच्छा पैकेज के लिए अगर तुम ट्राई करना चाहोगे तो आई वुड सजेस्ट यू टू एटलीस्ट स्टडी द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हिमांशु पांडे। व्हाट इज एवरेज प्लेसमेंट ऑफ आवर कॉलेज? सर मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगा सर, एवरेज प्लेसमेंट के अलावा कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं आईटी सेक्टर के लिए स्पेशली? देखो इस साल टेक महिंद्रा आई थी और टीसीएस आई थी। यश टेक्नोलॉजीज इस साल आई नहीं थी, बाकी नॉर्मली आती है। और उसके अलावा मतलब काफ़ी कंपनीज काफ़ी आई है। आई डोंट रिमेंबर द नेम्स एट द मोमेंट, बट द एवरेज पैकेज मैं कहूँगा कि 5 LPA के अराउंड रहा होगा अगर एवरेज देखा जाए तो। नॉर्मली कंपनीज इतना ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं रखती अपने कॉलेज में। बस ऐसा है कि अगर आप लोग अच्छी कोडिंग कर पा रहे हो, एप्टीट्यूड अच्छा कर रहे हो, तो यू कैन क्लियर द इंटरव्यू द प्रोसेस। और एक और क्वेश्चन था कि जो कोडिंग, जैसे आपने बताया कि टू पार्ट्स होते हैं, तो वो जो कोडिंग पार्ट में होता है जब अपना टेस्ट होता है, तो सर उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस किस चीज के आते हैं, लाइक रिलेटेड टू दिस डीएसए और रिलेटेड टू सम लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कोडिंग में? Usually, see, the entity has two coding questions. First question is comparatively easy and second is medium level question. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली वही होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब यू कैन यूज अरेज और वेक्टर एंड यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन भी अगर आप चाहो तो लॉजिकल मतलब नॉर्मल बिना कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज किए सॉल्व कर सकते हो। बट इफ यू हैव नॉलेज, पर मोस्टली क्या होता है, इफ यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट डेटा स्ट्रक्चर देन इट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि कई बार इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है, ट्रीज का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हेल्पफुल होता है। तो लाइक जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी टू मीडियम लेवल के रहते हैं? हाँ, मीडियम लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी मीडियम लेवल का ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और फर्स्ट क्वेश्चन ईजी रहता है। सर लास्ट में सर कोई चीज़ आप जो जूनियर को कहना चाहते हो या फिर कोई मैसेज जो कन्वे करना चाहते हो? ठीक है, मतलब तुम लोग, मुझे भरोसा है मतलब प्लेसमेंट तो इस बार काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो बस ये मत सोचना कि अभी टाइम नहीं है, अब प्लेसमेंट आ गया अब मैं कैसे करूँगा। तो बस ये चीज़ दिमाग में मत रखना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट मई जून तक हम लोगों के अभी भी प्लेसमेंट चल रहे हैं हमारी वजह से। तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, ऑलमोस्ट 1 साल है। तो कभी मतलब ये मत सोचना कि अब टाइम नहीं बचा, अपने प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर पाऊँगा। मतलब अगर तुम स्टार्ट अगर फेब में भी करोगे, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में भी करोगे, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम रहेगा। तो अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो तो वेल एंड गुड, मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई करते रहो। अगर इंटर्नशिप्स होगी तो तुम्हें बेनिफिट रहेगा रेज्यूमे में ऐड करने के लिए। साथ ही इंटर्नशिप से पीपीओज भी मिल जाते हैं कई बार, तो दैट इज़ वन गुड थिंग। ऑल्सो ट्राई टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे आता है, लाइक आई हैव गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश एंड ऑल। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस मैटर्स एज मच एज वेल। बिकॉज तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, तुम इजीली बात कर पाओगे। कई बार क्या होता है ना कि तुम्हें इंग्लिश नहीं भी आती है, द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड दैट एंड ही इवन अलाउज यू टू टॉक इन इंग्लिश, हिंदी, जब तो हिंदी में भी कन्वे कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। सो यस, दैट्स इट। Yes, sir. So this was all about today's interview. Sir, thank you so much जो आपने इतना टाइम दिया हमको, and we really hope कि स्टूडेंट्स को और जो अभी जो नेक्स्ट टीसीएस का इंटरव्यू और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर। बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए आगे। थैंक यू गाइस, यू आर वंडरफुल। और आई आल्सो होप कि काफ़ी प्लेसमेंट इस बार भी हो तो कॉलेज से, एंड आई बिलीव कि होंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।